હેલો બહેનોને વિનંતી, ખુરશી પર બેસી જાઓ, આપણે શરૂ કરવું છે. બા એ યશ બહાર એ લોકોને કે ને ચાના ગ્લાસ હશે ને તો પણ સાથે આવી જાય. હા એ કીધું તો છે. સો આપણે હવે 5 મિનિટમાં શરૂ કરીએ છીએ. સમય થોડોક હવે ધ્યાન રાખવાનો આવ્યો છે, તો વિલ સ્ટાર્ટ ઇમિજિએટલી. બોલો આવું ને જસ્ટ તમને ગણ કરાવો. તો તારી કંપની વિશે કીધું. હા યા અરે પણ વોટ શી ઇઝ ડુઈંગ એ જાણવું બહુ જરૂરી છે. તમારે કામ બહાર કોઈ નથી, એક બે જણ બધા આવી ગયા, મોસ્ટલી બધા. ઓકે સો આકાશ sit on your chairs. Almost everyone has come. We start. हेलो ओके सो अतुल सर आप सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाइए पीछे. ઓડિયન્સમાં 3 માઇક મૂકવામાં આવ્યા છે. સો વન ઓન ધ લેફ્ટ સાઇડ, વન ઓન ધ રાઇટ હેન્ડ સાઇડ, અને વન માઇક વિલ રોટેટ હુએવર વોન્ટ્સ ટુ સ્પીક. અધરવાઇઝ તો એની પાસે રોટેટ થયા કરશે. અધરવાઇઝ વોટ એવર માઇક જેને બોલવું હોય તે એકબીજા સાથે શિફ્ટ કરીને વાત કરી શકશે. સૌથી પહેલાં પ્રેઝન્ટેશન થશે, એમાં બધાએ પહેલાં ખાલી જોવાનું છે. ક્વેશ્ચન્સ આન્સર્સ એના પછી કરશું. સો લેટ રુસ્તમજી ફિનિશ ધેર વર્ક, then we'll start question answers. हाँ ठीक है. कॉलर माइक उन्हें लगा दिया. ठीक है. हाँ ये लोग इंटरनल करते जाएंगे लोग तीनों. ये 3 माइक अंदर सर्कुलेट होते रहेगा. अच्छा टोटल 5. हेलो हाँ तो यहाँ पर एक नहीं, यहाँ से एक ले लो. यहाँ पर एक ही रहेगा. अरे भगवान, वहाँ पर से भी नहीं ये रुस्तम जी के लोग हैं. वहाँ पे 2 है ना, एक मेरे पास है. हाँ तो ये ले लो. ये इनके पास है कॉलर माइक, एक इनके पास है. बस बहुत. अब ये ऑडियंस में दे दो ना वहाँ पर. हाँ 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 महेश भाई બેસતા થાઓ ને ત્યાં. અને આવો ને 1 મિનિટ આવો ને. અતુલ સર સિનિયર આર્કિટેક્ટ. हेलो Hi, Hi. nice to meet you. सेम हियर. सीनियर शी इज into architect business. मतलब बड़ी कंपनी में she I'm an interior architect and I work with a lot of developers, not just y'all yet, but everyone. And it's nice to see things from our perspective as well. And we'll be in touch. श्योर. सो आपका लैपटॉप यहाँ से रिमोट से ऑपरेट होगा. अच्छा नाइस ठीक है. आपको पॉइंटर वगैरह कुछ चाहिए था. नहीं बट मैं खड़ा रह के ही बात करेगा. हाँ हाँ नाइस नाइस नाइस. मैं इधर बैठ के नहीं बात कर सकता. हाँ ठीक है ठीक है. सो इन 5 मिनट्स विल स्टार्ट. Yes, yes. 5 मिनट्स. चेयरमैन स्वामी साहब તમે બેસો. Welcome to Andheri Varmanagar CHS. First presentation of Rustamji shall begin. આજે ફર્સ્ટ પ્રેઝન્ટેશન થશે, એના પછી જે પણ લોકોના મત હશે કે શું ચેન્જીસ કરવા છે એ પણ જાણીને નોટ કરવામાં આવશે, અને એના પછી વી વિલ ડુ ઓલ ધ ચેન્જીસ દેટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. સો ફર્સ્ટ લેટ ધેમ ડુ ધ પ્રેઝન્ટેશન. એના પછી બધાના તમારા જેટલાના પણ મત હશે અહીંયા નોટ કરવામાં આવે છે, અને એના પછી એના એમેન્ડમેન્ટ જે પણ જરૂરી હશે તે કરશે. એ લોકોએ જે બેસ્ટ પોસિબલ છે એ કર્યું છે, પણ ફર્સ્ટ પ્રેઝન્ટેશન કોઈ દિવસ કોઈનું કમ્પ્લીટ હોતું નથી. વી વિલ ટ્રાય અવર લેવલ બેસ્ટ. સો અંધેરી વર્માનગર સિવાય બીજા ઇન્વાઇટીસને પણ બોલાવવામાં આવ્યા છે. 1 2 3 4 5 7 8 એવી ના ઘણા લોકો આવ્યા છે. બધા ઇન્વાઇટીસને વેલકમ. તમને પણ તમારે કેવા તમારા ઘર કેવી રીતના બની શકે એનું જસ્ટ જીસ્ટ આઈડિયા આપવામાં આવે છે. અત્યારે ખાલી પ્લોટ બી રિલેટેડ પ્રેઝન્ટેશન કરવામાં આવ્યું છે. દેટ ઓલ્સો નોટ થોડું ઘણું એરિયા છોડીને, જેથી જે પણ ડિફિકલ્ટી હોય તેઓ સેટલ કરી શકે એટલા માટે. જેવું પ્લોટ બી થશે અને જો લક્ષ્મી એસ્ટેટ CHS વાળા મેમ્બર લોકોને મન થાય કે અમને પણ બધાને જોડાવવું છે સાથે, તો ઓલ આર વેલકમ.
તો જ્યારે ABC સાથે જોડાશે તો નવો પ્લાન બની શકશે અને બહુ લાર્જર એમેનિટીઝ બની શકશે. દેટ ઇઝ ઓલ્સો પોસિબલ. દેટ ડિપેન્ડ્સ અપોન 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8ના મેમ્બર્સની ઈચ્છાઓ પ્રમાણે. મેજોરિટી ઓફ ધ મેમ્બર્સ have ઓલરેડી સેડ યસ, બટ સ્ટીલ વી આર ડુઈંગ ફર્સ્ટ પ્રેઝન્ટેશન્સ જેમાં લોકોને ધ્યાનમાં આવે કે આપણે શું કરી રહ્યા છે. સો વી શેલ બિગિન. આપણી પાસે રુસ્તમજીના સિનિયર આર્કિટેક્ટ અતુલભાઈ છે, પછી રોહિત સર છે બીડી ટીમના સિનિયર, આકાશ છે અને આકાંક્ષા કરીને પણ આર્કિટેક્ટ છે. એ રુસ્તમજી તરફથી મારી બાજુમાં રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં બેઠા છે એ છે. અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં આપણે ત્યાં આપણા ચેરમેન, લવિંગ ચેરમેન અવની ગાંધી, સેક્રેટરી રાજેશભાઈ, પીએમસી મિસ્ટર મર્ચન્ટ મહેશભાઈ દોશી અને આપણા એડવોકેટ સ્વામી. સો મેજોરિટી બધું જ અહીંયા મૂકવા, બધા લોકોને ગોઠવવામાં આવ્યા છે અને બધા જ લોકો મનથી દિલથી કામ કરવાની ઈચ્છા કરી રહ્યા છે. સાથે વોલેસ તરફથી સ્મિતા મેડમ એડવોકેટ પણ અહીંયા આવ્યા છે. સો જે પણ સવાલ જવાબ હશે તે બધા જ એકબીજાને સાથે સમજીને વિચારીને કરવાનું અને આપણે શાંતિથી આગળ વધવું છે એ એંગલ પર આપણે વધશું. ઓકે, તો હવે આપણે પ્રેઝન્ટેશન શરૂ કરીએ છીએ. બધા શાંતિથી જોજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. એક સાઈડ ત્યાં માઇક છે, કઈ બાજુ છે માઇક અત્યારે હાથમાં? લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ? હા હા, ઓકે. તો ત્યાં સુધી મારી પાસે રાખો. गुड मॉर्निंग. ये इन्होंने बताया कि यहाँ पे रुस्तम जी का टेबल है, यहाँ पे सोसाइटी का टेबल है. मेरे को तो दिल करता है मैं वहीं पे आके बैठ जाऊँ बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू बिलीव. तो ऐसा है कि मैं बैठ के प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, उससे खड़ा रह के जब बात करता है ना थोड़ी एक प्रोफेसर वाली फीलिंग आती है एंड दैट इज व्हाट आई लाइक. तो मुझे बताया गया कि यू आर प्रॉबली मोर कंफर्टेबल इन हिंदी दैन इन इंग्लिश. तो मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम हिंदी में बात करने की. जो लोग मुझसे पहले नहीं मिले, बिकॉज आई हैव मेट सम पीपल फ्रॉम द कमिटी, जहां पे हमने एक फर्स्ट कट सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन दिया था ब्रॉड लेवल पे अलाइनमेंट का. वो टाइम पे लोग मुझसे मिल चुके हैं, बट आई थिंक आई एम सीइंग अ लॉट मोर पीपल हियर. 76 members to be precise and 6 shop owners. तो मेरा नाम है अतुल दाते. मैं रुस्तम जी के साथ पिछले 16 साल से जुड़ा हुआ हूं. इन दिस इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 29 years. An architect with a master's degree in construction management. 55 साल उम्र, और अगर रुस्तम जी ने छोड़ा तो यहीं से रिटायर हो जाऊंगा. सो जब कोई यहां पे खड़ा रह के ये बोलता है ना कि मैं यही कंपनी से रिटायर हो जाता हूं, even without my directors and promoters being present over here, says a lot about the company. किस तरह से हमको काम करने का नजरिया दिया जाता है, किस तरह से हमको नए नए एक्सपेरिमेंट करने की छूट दी जाती है. एंड आई थिंक हर चीज में हमेशा प्रमोटर होता ही है. द नेम रुस्तम जी इज अ ब्रांड नेम. एंड फॉर दोज ऑफ यू डू नॉट नो, रुस्तम जी इज द नेम ऑफ my fathers, and when I say my father, it is actually my chairman's father. And the reason I say that it is also my father's name is because they have treated me almost like the same family member. This is one company where I do not need to share my last name with my promoter's last name. That is where I believe my family is. So even though my surname is Date, my chairman's name is Baman Rustam Irani. Rustam Irani was his father's name. और जब कोई प्रोजेक्ट के ऊपर मेरे पिताजी का नाम आता है, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है in terms of what I actually want to deliver, and that is what I am here to present. यहाँ पे हमारे बिजनेस डेवलपमेंट के मेरे colleagues है. I have Rohit Prasad and Akash who have been interacting with the society. आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे बिजनेस डेवलपमेंट वाले प्रेजेंट करते हैं,
बट यहां पे एक आर्किटेक्ट प्रेजेंट कर रहा है, उसका एक कारण है। जो भी मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर अगला 1 घंटे में, दैट इज द प्रेजेंटेशन दैट आई एम टॉकिंग, उसमें द व्हाई बिहाइंड द व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लोग हमेशा ना नंबर्स में उलझ जाते हैं, कितना कॉर्पस मिला, कितना रेंट मिला, हाइट क्या मिला, ये क्या मिला, शिफ्टिंग अलाउंस कितना है। नाउ आई अंडरस्टैंड दैट ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट, वो एक कमर्शियल एस्पेक्ट है, लेकिन आप आपके एग्जिस्टिंग घर की चाबी हमारे हाथ में दे रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है यह देखना कि आपको आपका नया घर जो मिलने वाला है, नई वास्तु जो मिलने वाली है, और जो नया हम लोग पूरा माहौल क्रिएट करने वाले वो कैसा है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट पीपल फॉरगेट। People always look at only the number. People don't look at the emotion. And architecture and design. I have an interior architect sitting right in front. She will agree with what I am saying. It is more to do with emotions than with the actual product. And everything that we do in Rustam ji is actually resonating with emotions. अगर वो हमारी भावनाओं के साथ तालमेल रखता है तो वो अच्छा डिजाइन है। आज आप देखोगे कि रुस्तम जी ने जितनी भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की है, यहां पे हम लोग रीडेवलपमेंट कर रहे हैं 33/9 के अंदर, जिसको हम लोग क्लस्टर डेवलपमेंट बोलते हैं। देयर आर 4-5 लार्ज क्लस्टर डेवलपमेंट्स जो रुस्तम जी ने अभी साइन ऑफ किए हैं एंड जहां पे ऑलरेडी काम चालू है। But there is a lot of work that we have done in the entire redevelopment space, whether it is 33/5, which is MHADA redevelopment, whether it is 33/10. तो हमने हमारा रीडेवलपमेंट की जर्नी चालू की 20 साल पहले, और वहां से हमने जितना एक्सपीरियंस लेना था वो सारा निचोड़ के हमने हमारे रीडेवलपमेंट प्रपोजल में डाला है। तो जब कोई हमको पूछता है, या मेरे को पूछता है, या बमन को पूछता है, बमन विच इज द बेस्ट बिल्डिंग दैट यू हैव क्रिएटेड, तो हमारा दोनों का आंसर एक ही होता है, द नेक्स्ट वन। बिकॉज हम सोचते हैं कि जो भी चीज हमने सोची है, जो भी चीज हमने सीखा है, वो हम लोग अगले इसमें इंप्लीमेंट करें। एज आई सेड, इमोशंस या भावना इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ एवरीथिंग दैट वी डू। इन दिस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट यू विल सी व्हाटएवर वी क्रिएटेड इज क्रिएटेड विद इन अ सर्टन सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। मतलब हमारे ऊपर कुछ बर्डन है। सब लोगों को मालूम है पार्ला, अंधेरी और आजू बाजू के जो एरियाज है क्लोज टू द एयरपोर्ट, उनका एक ही दुख और एक ही दर्द है, वहां पर सिविल एविएशन की वजह से हाइट नहीं है। अभी जितनी हाइट मिली, या तो हम लोग रोते बैठे कि भाई हमारे पास इतनी हाइट नहीं, क्या करे, या जो मेरे पास है उसके अंदर हम लोग बेस्ट क्या कर सकते हैं। एंड आई थिंक एवरीबडी नोज कि एक बहुत अच्छी चीज होती है कि अगर अच्छी हाइट मिलती है तो हम लोग और बड़ी हाइट दे सकते हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बट वो ख्वाब वाली बात है। एंड आई थिंक रीडेवलपमेंट का सारा गेम, एंड रोहित हमेशा उनके प्रेजेंटेशन में बोलता है, क्रिटिकल थिंग्स ये है कि जितनी जल्दी आप डिसाइड करते हो उतने जल्दी काम चालू होता है, उतने जल्दी रीडेवलपमेंट खत्म होता है। बिकॉज एवरी पासिंग डे द थिंग्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट। सो आज की तारीख में हमारे पास एक हाइट का अप्रूवल है। वो हाइट के अप्रूवल में हमको एक पर्टिकुलर FSI कंज्यूम करना है प्लॉट के ऊपर, टेक्नो कमर्शियल वायबिलिटी के हिसाब से। वो हमने कैसा कंज्यूम किया है, किस हिसाब से हमारी फर्स्ट मीटिंग होने के बाद हमने मेंबर्स की जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी इच्छाएं थी, वो कैसे हमने इनकॉर्पोरेट की है, वो सारी चीजें आप यहां पे देखोगे। ये प्लॉट का लोकेशन है। ये पहली वाली जो स्लाइड्स है आपको सब लोकेशन वगैरह मालूम है, बट जस्ट टू गिव अ कॉन्टेक्स्ट, ये हमारी डिजाइन फिलॉसफी है। और बाकी सब लोग बोलते हैं कि जैसे होता है ना कंपनी का मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, वैसा है हमारी डिजाइन टीम का विजन स्टेटमेंट है। एंड एवरीथिंग दैट इज रिटन ओवर हियर, आई रोट दिस 15 years ago when I joined Rustam ji, and everything that you read is followed in letter and in spirit by every person in my team. I have a team of almost 70 people working for me in the design team. 70 लोग हैं मेरे पास। वो हर बार मैं उनको एक ही चीज बोलता हूं कि भाई आप डिजाइन कर रहे हो, FSI एक चीज है। बिल्डर को ना FSI ये शब्द से बहुत प्यार है। मैं बोला FSI शब्द एक तरह है, लेकिन आपको ये हमेशा सोचना चाहिए हम घर किसके लिए बना रहे हैं। The only people who actually pay my salary are sitting right in front of me, and they are my customers. I do not ever believe
that my promoter or the accounts department ever pay my salary. It is the customer who pays my salary. तो अगर जो चीज मैं सोचता हूं वो कस्टमर के नजरिए से सोचना चाहिए. मैं